again welcomes you. Today we are going to continue quadratic equation, the final point of the topic, which is final point relation between roots of quadratic equation and their coefficient. मतलब जो quadratic equations होता है उसके coefficients और उसके roots उनके बीच का relations क्या होता है और रिलेशन किस तरह से होता है और देन एप्लीकेशंस ऑफ अ quadratic equation, that means word problem. We are taking the few word problems on the board and you can understand what easily, I think easily you may understand, and this lesson is finished after the completion of the word problem. Okay, first of all we are going to learn relation between roots of quadratic equation and coefficient. Okay, on the board you see relation between roots of quadratic equation and coefficient. रिलेशंस क्या होते हैं? मान लीजिए अल्फा एंड बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation which quadratic equation? ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, then alpha plus beta, what happened? alpha plus beta, तो क्या लिखना पड़ेगा? By discriminant method I am not solving your details, then I am writing only answer. अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा का आंसर कैसे आया? तो इस एक्शन से आया. स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस अल्फा, इसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का ये है. सिमिलर मैनर b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमको मिल सकता है, मतलब दोनों प्लस कराएं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. तो व्हाट आंसर्स? b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. इससे क्या मिला हमको? प्लस BAC और ये प्लस पकड़ लो, दोनों में से किसी भी पकड़ो तो एक प्लस और ये माइनस डिलीट होता है. बचा क्या? माइनस बी. दैट मीन माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a. माइनस माइनस गया, बचा क्या? माइनस b अपॉन a. द आंसर ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. एंड सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, व्हाट आंसर? मतलब इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आंसर माइनस बी. इसके हिसाब से ही आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाइड बाय माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. इसी का ये आंसर आई एम राइटिंग हियर. द आंसर बिकम्स, व्हाट हैपन्स? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका आंसर जो आता है, आई थिंक
multiplication I am not solving here detail. This 4ac divided by 4a square, 2a into 2a 4a square, that means 4 4 कौन, a square का a गया, यहाँ पे a गया, बचा क्या c upon a, अल्फा into बीटा c upon a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b upon a. अब these मतलब ये रूट्स हैं और ये कोएफिशिएंट का, ये जो है कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, उनका रिलेशन क्या होता है, जो रूट्स, अगर रूट्स की भी एडिशन हो तो आंसर इज दिस, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन हो आंसर इज दिस. यूजिंग दिस वी आर सॉल्विंग सम एग्जांपल्स. ओके, इफ वी आर गेट फर्स्ट एग्जांपल, रिलेशन इनका जानने के लिए, अल्फा एंड रूट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, 2x square plus 6x minus 5 is equal to 0. Then find, then what alpha plus beta and alpha into beta. Then find alpha plus beta and alpha minus beta. ओके, अभी हमने सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे. राइट डाउन दिस इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 6x minus 5 is equal to 0. Okay, comparing equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. कंपेयर होने के बाद क्या मिलता है, a is equal to 2, b is equal to 6 and c is equal to minus 5. राइट, तो अल्फा प्लस बीटा रूट आता है, तो हमको क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आंसर इज माइनस 3. ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा, व्हाट हैपन्स, अल्फा इंटू बीटा मीन्स c upon a, c कितना है, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स आंसर इज माइनस 5 बाई 2. इतना आसान है. अगर इक्वेशन है उसको कंपेयर कर लो, आफ्टर कंपेयरिंग राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट, दैट मीन्स दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स. ओके, नाउ वी आर गेटिंग अनदर एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग roots of quadratic equation x square plus 5x plus minus 1. then find, क्या फाइंड करना है हमको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड करना है. ओके, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इक्वेशन, x square plus 5x minus 1 is equal to 0. Comparing with equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. इसके साथ इसका कंपैरिजन होगा, मतलब x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर, therefore a is equal to 1, b is equal to 5, c is equal to minus 1. हमको क्या मालूम है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस 5 अपॉन माइनस 1, सॉरी प्लस 1, minus 5 upon 1, right? That means minus 5.
and alpha into beta c upon a. What is c? minus 1 upon 1, that is minus 1, right? हमको क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है? जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है उसे यूज हियर, that is alpha plus beta bracket क्यूब minus 3 alpha into beta bracket alpha plus beta. This is the formula. Put here alpha plus beta cube, that means minus 5 cube minus 3 into alpha beta minus 1 alpha beta का आंसर minus 1 into alpha plus beta minus 5. समझे क्या? That means alpha into beta minus 1, alpha plus beta minus 5 and 3. There's 5's cube. What happens? 5's cube minus 125. 5 that 25, 5 that 125 minus 5 minus 3, that means minus 15. That is equal to minus 140 is the answer. And alpha square plus beta square, that means another we want alpha square plus beta square, that is equal to alpha plus beta bracket square minus 2 alpha beta. Alpha plus beta, what happens? Minus 5 square minus 2 alpha into beta minus 1, that is 5 square is minus 5 square is 25 and minus 2 into minus 1, that is plus 2, that is equal to 27. Alpha cube plus beta cube, answer is 140, and alpha square plus beta square, that is 27. This is the answer. Okay, are you understand? Okay, अगर ओनली रूट्स देते हैं, दैट मीन्स रूट देने के बाद हमको इक्वेशन निकालना होता है, तो कैसा करना पड़ेगा? राइट, इफ रूट्स आर गिवन, नाउ to obtain the quadratic equation, if roots are given, then how obtain the quadratic equation? If alpha and beta are roots of the quadratic equation in variable x, are roots of quadratic equation in variable x, then finding the quadratic equation, roots are given, then find the quadratic equation. Then how to obtain quadratic equation? Two roots are given, then quadratic equation can be obtained as how obtain the quadratic equation? X square minus addition of roots into x plus product of roots is equal to 0. क्या? First of all, x square minus addition of roots into x plus product of roots. I will give example. Suppose obtain the quadratic equation. Example, obtain the quadratic equation. Roots are minus 3 minus 7 are roots of quadratic equation. Roots of quadratic equation. Then find quadratic equation. रूट्स दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस्तेमाल करना है, राइट? देन अल्फा प्लस बीटा
beta. Suppose this is alpha and this is beta. Minus 3 plus minus 7. What happens? Minus 3 minus 7 minus 10. Alpha into beta minus 3 into minus 7, that is 21. ओके, अभी इस फॉर्मूला में डालना है एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स माइनस 10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 21 इज इक्वल टू 0. अगर बाहर माइनस है तो चेंज होता है एक्स स्क्वायर प्लस 10 into x, 10x plus 21 is equal to 0. This is the answer. Roots of the quadratic equation given, then roots equation is in that format, you can find it. Very easy way. Understand? Okay, now we are going the last point, applications of a quadratic equations. Okay? Now the last point, that means applications of a quadratic equation. Quadratic equations are useful to solve the problems arising in our day-to-day life. The method of solving problem consists of the main 3 steps. In first step, convert word problem into symbolic language. That is, from mathematical equation by identifying the relationship existing in the problem. Second step, solve the quadratic equation thus formed. And third, interpret the solution of the equation into verbal language, and the appropriate solution satisfying the given condition are to be considered. Means ये 3 steps, these are main 3 steps, which are convert word problem into symbolic language, that is a mathematical equation, identify the relationship between existing in problem, solve the quadratic equation thus formed, and third, interpret the solution of the equation into verbal language. The appropriate solution satisfying the given condition. Okay, now I am not reading the word problem, or I am not writing the word problem on the board, but I read the word problem and solve here. Okay, so here we are getting to solve examples in practice set 2.6. okay, 2.6 textbook, the word problem. Okay, I read the word problem, you can understand. The product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find the present age. What happens? The product of Pragati's age 2 years ago and 3 years is 84. Find the present age. Right. Pragati's present age. Pragati's present age is equal to x. Okay. हमने मान लिया प्रगति का प्रेजेंट एज x होगा. Then 2 years ago, 2 years ago, what happens? 2 साल पहले, in previous year, that means Pragati's age is equal to x minus 2. 2 साल पहले x minus 2 होगा. 3 years, 3 years, Pragati's age, what happened? x है 3 years के बाद, 3 years and age 3 years from now, that is 3 years now. Pragati's age x minus 3. The problem is that product of Pragati's present age and
Pragati's present age 2 years ago and 3 years, hence 84. Product of this is 84. Therefore, by condition, what happens? X minus 2, x plus 3 is equal to 84. We are going to solve. What happens? X multiplied by this bracket x into x plus 3 minus 2 x plus 3 is equal to 84. That means x square plus 3x minus 2x minus 6 is equal to 84. Therefore, x square plus 3x minus 2x plus x minus 6 goes this side. Okay, or minus 84 coming this side, minus 84 is equal to 0. Therefore, x square plus x minus 90 is equal to 0. This is a form of a quadratic equation. Now solve the equations. Okay, we want to solve the equation and find the roots by factorization method, which is a simple method. Coefficient of first one constant term is minus 90, that is minus 90. माइनस 90 के फैक्टर्स निकालने हैं हमको 1 आना चाहिए, मतलब प्लस 1. 10 9 जा 90, दैट मीन्स प्लस 10 माइनस 9 प्लस 1 आएगा. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x minus 90 is equal to 0. Okay, make underline. Therefore, x common निकालो, x plus 10 minus 9 common निकालो, x plus 10 becomes 0. Okay, therefore x plus 10 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. Right? Therefore, x is equal to minus 10 or x is equal to plus 9. Okay, this is the solution. That means x is a minus 10. That means, but age cannot be negative. Means age negative नहीं होता ना. Age cannot negative. So this is cancelled. Okay, x is equal to minus 10, cancelled. Therefore, x is equal to 9. Present age of Pragati is x is equal to 9. This is the word problem. I think you are understand very easily. Okay. We are going to solve another example from the practice set 2.5. Another example. The sum of squares of two consecutive even natural numbers is 24. Find the numbers. Okay, I am not writing here the problem. We are going to solve the problem on the board. Let two consecutive natural numbers. Let two consecutive natural numbers, natural numbers x and x. Sorry, I think problem is that two consecutive numbers x and x plus 2, x, one x, another 2. The sum of two consecutive numbers. Therefore, x, sum of two consecutive numbers, sum of squares means x square plus x plus 2 square
is equal to 244 by condition. Sum of the squares of two consecutive numbers is 244. And then what happens? X square, x plus 2 bracket square, that means a plus b bracket square, a square plus 2ab, 2 into a 2ab plus b square is equal to 244. That is x square plus x square plus 4x plus 4 is equal to 244. Therefore 2x square plus 4x, this 4 goes on these sides, then what happens? Or plus 4 from these sides, plus 4 minus 244 becomes 0. Therefore 2x square plus 4x minus 240 is equal to 0. We are reducing the equation by dividing 2. Divide by 2. What happens? X square plus 2x minus 120 is equal to 0. Okay? Then factorization, by factorization method, 1 into minus 120, that is minus 120, we want plus 2, therefore 12 tens are 120 plus minus, therefore x square plus 12x minus 10x minus 120 is equal to 0. Underline this, then what happens? Common x, x plus 12 minus 10 x plus 12 is equal to 0. Therefore x plus 12 and x minus 10 is equal to 0. Therefore x plus 12 is equal to 0, or x minus 10 is equal to 0. Right? X plus 12, that is x is equal to minus 12 or x is equal to 10. Okay, minus not a natural, minus 12 is not a natural number. Okay, minus 12 not natural number, so 10 is acceptable. The required natural number 10, x is equal to 10, so x is equal to 10 and x plus 2 another number, x plus 2 is equal to 10 plus 2 is equal to 12. Therefore 10 and 12, those are two numbers. Okay, 10, we make also cross verification. Square of 10 is 100 and square of 12 144. Answer is 244. Which is this? Okay, I think all of you understand our word problem solving on the board is very well. Okay, here the lesson is finished. Thank you.